Hello all. Today we are going to learn what is agile processes. अब पिछले lectures में हमने देखा था कि what are generic processes, what are prescriptive process models. उसमें हमने different models देखा था, out of which we understood that the linear fashion may not always work. It may take a lot of time for the development. So even if we give early release, like way too early release, then there is a problem because the software may not be up to the mark. If we are giving late deliveries, then there is a high risk that the market may not demand it in future. So ideally, it says you should have an agile process. So exactly what is an agile process or what is agility? Agile process is basically an approach which demands continuous improvement in the model, which encourages rapid changes, which has flexible approaches like it the requirements and the solutions which evolve over the time. So basically, agile process has an effective response to change. Effective response to change in the sense कि हम जब भी process design करते हैं तो हमें एक part ऐसा रखना चाहिए जहाँ पे changes accommodate easily हो सके. मतलब in advance we keep that flexible areas in all the development process, entire development process where if at all any changes occur, then that change should not hamper the ongoing process. So this is how agility works with the effective communication of team members, have keeping aside their ego. It is not about like us and them. It is not about like my team and your team. Everyone communicates, everyone works towards it, everyone makes sure that what are the areas where the flexible approach can be kept. Flexible approach in the sense where your changes can be accommodated, because requirements beforehand कभी भी ready नहीं होता कि software develop करने से पहले सब हुआ ये हुआ. Nothing like that. Requirements change over time. So there are some things you may need before, but then later on you may not. In fact, there are some things you need to add somewhat or you need to modify. So ये सब चीजें, ये सब planning जो uncertain होती है, इसके लिए अजाइल प्रोसेस में हम ऐसे प्लान्स बनाते हैं जो फ्लेक्सिबल हो कि अगर ये प्रॉब्लम्स हुआ तो उसका ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकता है, लाइक दैट. एंड इट आल्सो एम्फसाइजेस ऑन इंक्रीमेंटल डिलीवरी स्ट्रैटेजी. यानी जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं वो इंक्रीमेंट्स में हम डिलीवर करते हैं यूजर को, सो दैट हम यूजर्स का फीडबैक ले सके प्रॉपरली एंड हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहे सॉफ्टवेयर में अनलेस इट इज अप टू द मार्क. So that incremental delivery helps to understand more and more detailed requirements from the user. Also, it helps us to understand whether the user is satisfied with the given software or not. So agility is nothing but it is rapid development, incremental delivery of the software. It also gives the guidelines for stress delivery over analysis. It gives the stress on delivery rather than analysis and design. यानी analysis कैसा करना चाहिए, design कैसा करना चाहिए, इससे ज्यादा stress यानी इससे ज्यादा जोर वो delivery पे देता है कि software जो हम deliver कर रहे हैं एक increments में, फिर चाहे वो prototype में हो, prototype से details ले लेके हमने एक्चुअल वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर डिलीवर किया हो. सो वो डिलीवरी पे स्ट्रेस इसके लिए देता है कि डिलीवर होने के बाद वेदर द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एज इंटेंडेड, कि उसमें और कोई अगर चेंजेस आ रहा है, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा डालने हैं उसमें. सो इट इज फोकस्ड मोर ऑन दैट कि आफ्टर डिलीवरी इसका परफॉर्मेंस कैसा है, फीडबैक कैसा है कस्टमर से, बिकॉज एनालिसिस एंड डिजाइन दैट प्लान में चेंज इफ देर आर चेंजेस इन दी फर्स्ट इंक्रीमेंट. Also, it involves the active and continuous communication between developers and customers. As I said, कि increments में वो like bits and pieces में वो software deliver करते हैं. So there is a continuous communication between developers and customers as to what has to be done and what not. So it is not necessary that after increments he communication ho. Many times it happens that the ongoing processes maybe there are some communications taking place where you understand the detailed requirements. You have an detailed understanding of what the customer is expecting. So agile process gives you an flexible approach कि जितना भी changes हो सकता है वो minimum cost में accommodate कर सके. अभी cost की बातें हमने इसके लिए की. We are talking about the cost because
जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आएगा, जितना ज्यादा चेंजेस आएगा, उतना सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ओवर द टाइम बढ़ते ही जाएगा. सो इफ वी हैव अ वेल डिजाइन्ड अजाइल प्रोसेस, इट flattens the cost of change curve by coupling incremental delivery with agile practices like like continuous unit testing and pair programming. सो इट सेज कि अगर प्रॉपरली अजाइल प्रोसेस डिफाइन किया है, यानी प्रॉपरली एक फ्लेक्सिबल प्लान डिफाइन किया है कि अगर चेंज आया तो वो प्लान में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और ना ही उसके कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग में, देन ये जो हमारा कर्व है, इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज व्हेन वी यूज ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. तो जैसा जैसा चेंजेस जा रहा है ओवर द टाइम, वैसा वैसा कॉस्ट बढ़ते जा रहा है. जबकि ये जो दिख रहा है ग्रे लाइन, दैट इज दी कर्व यूजिंग अजाइल प्रोसेस. क्यों? क्योंकि हमने अजाइल प्रोसेस में प्लान इतना फ्लेक्सिबल बनाया था कि 10 चेंजेस भी आए, सो इट इज पॉसिबल कि हम उसको अकोमोडेट कर सके. सो जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट्स देते रहते हैं, वैसे वैसे हम उसका यूनिट टेस्टिंग और ये सब भी करते रहते हैं, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि ओके व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सॉफ्टवेयर, whether it is working correctly or not. So दिस इज द आइडियलाइज्ड कर्व, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है. बट हाँ, अगर हमने अजाइल प्रोसेस यूज किया है तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द कॉस्ट. तो क्योंकि कॉस्ट बनाते हुए ही सॉफ्टवेयर को बढ़ते जाता है, दैट्स व्हाई द सॉफ्टवेयर बिकम्स वेरी कॉस्टली. बट if you are using a proper developed approach, then in that case what happens, the software का curve over here is smaller in the sense कि जो cost बढ़ रहा है वो थोड़ा कम बढ़ रहा है. So that is like an affordable prices. So that's why we say that using agile processes, the cost can be balanced. So agile process is nothing but driven by customer descriptions of what is required, that I have explained it before. It makes some assumptions like it recognizes that the plans are short-lived. जैसे मैंने बोला, the team members always believe that the plan is temporary. So they already are ready with the mindset that okay, ये plan temporary है, short lived in the sense it will have some changes for sure. So accordingly only they make a plan, they act. It develops software iteratively with a heavy emphasis on construction activities. Like heavy emphasis on constructions in the sense कि जैसे ही software iteration में develop होता है, they make sure that the software is constructed is having all the possible features, it is incorporating all the requirements possible from the customer so that the customer is satisfied. It also makes assumption like the analysis, designing, testing is not predictable. क्यों? क्योंकि जब जब changes आएगा ये सारा चीजें obviously change होगा ही. इसीलिए it has a tendency to adapt changes as occurring. So agile process यानी एक ऐसा plan define करो कि जब जब changes हो तो वो plan उसको adapt कर सके. Adapt करना मतलब वो plan में वो already fit हो सके, ऐसा एक scope रखना चाहिए. Hence it delivers multiple software increments, delivers an operational prototype or portion of an OS to collect customer feedback. So this also I have mentioned before that multiple softwares increments में हम उसको release करते हैं. वो increments के basis पे जो feedbacks मिलते हैं, accordingly हम उसमें changes accommodate करते जाते हैं to make a better software. Next we'll study what are the agility principles.